सो मॉनसून रो हमें थियोरीज देखि देछे डिफरेंट थियोरीज ऑफ मॉनसून। तो आज हमें देखबा मॉनसून रो थियोरीज तो देखि देछे मेकानिज्म ऑफ मॉनसून हाउ मॉनसून ऑनसेट केमती करे और केमती प्रोपागेट करे मॉनसून रो ऑनसेट एंड प्रोपागेशन को देखिबा ना मॉनसेट रो आगे हम देखिबा ऑनसेट ऑफ मॉनसून और मॉनसून केमती इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे ऑनसेट करूची ऑनसेट ऑफ मॉनसून मैम के स्टार्टिंग तो मॉनसून आईएमडी अनुसार जदि देखिबा मैं अकॉर्डिंग टू आईएमडी जदि आईएमडी अनुसार देखिबा फर्स्ट वीक ऑफ जून ऑनसेट ऑफ मॉनसून आईएमडी अनुसार फर्स्ट वीक ऑफ द जून इज द ऑनसेट ऑफ मॉनसून तो मॉनसून ऑनसेट करूची फर्स्ट वीक ऑफ जून किसी फैक्चुअल डेटा से हमें देखिबा देन मॉनसून विड्रॉल केबे करे आफ्टर 15 ऑफ सेप्टेम्बर तो सेप्टेम्बर 15 ପରେ मॉनसून विड्रॉल्स करे है ना कोठू विड्रॉल करे मॉनसून विड्रॉल्स फ्रॉम राजस्थान तान से रखिबो मॉनसून स्टार्टिंग वे केरला रु स्टार्टिंग बा ऑनसेट केरला रे हुए बट विड्रॉल स्टार्ट करे विड्रॉलिंग फ्रॉम दिस पार्ट फ्रॉम द राजस्थान रू विड्रॉल करे है ना एंड राजस्थान इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ मॉनसून ये तो लास्ट पहुंचे सब जल्दी पहुंचे कोठी केरला रे दैट मीन्स ऑनसेट ऑफ मॉनसून हैपेंस इन केरला देन मॉनसून विल ग्रेजुअली मूव लास्ट पहुंचे तो राजस्थान रो कोठी थार डेजर्ट जो थार डेजर्ट इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ मॉनसून दैट मीन्स हम कहबा जो तुमरो जैसलमेर इज द डेजर्ट एरिया ये जो तुम्हारा डेजर्ट अच्छी दैट इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ मॉनसून सो मॉनसून विल ऑनसेट हियर इन केरला देन ये ग्रेजुअली मूव करके लास्ट रे पहुंचबे दैट इज बट जुलाई 15 सो जुलाई 15 एंड अर्ली अगस्ट जाइए पहुँचब तुम कौटी पहुँचब राजस्थान पहुँचब दैट मीन्स ताको मासे लगे 1.5 मास लगे 1.5 मंथ्स लगे पूरा होल इंडिया को कवर करने आंसर मन कह ऑनसेट वंस केरला रे एंटर कला परे पूरा ऑल ओवर इंडिया को कवर करने ताको 1.5 मंथ्स लगे मॉनसून को एंड लास्ट डेस्टिनेशन होची थार डेजर्ट लास्ट पहुँचब बट विड्रॉल कर फास्ट सैठू दैट मीन्स आम कह द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इज ओनली 1 मंथ इन राजस्थान रो थार डेजर्ट रे सो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून जदि हम देखबा 1 मंथ ओनली 1 मंथ तो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून कोठी देखा जो थार डेजर्ट रे ओनली 1 मंथ और जेहेतु ड्यूरेशन 1 मंथ दैट मीन्स रेनफॉल तो कमी जीवो ड्यूरेशन कमिले अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल रिड्यूस एज द 1 मंथ बट रेस्ट ऑफ द इंडिया जदि हम देखबा ड्यूरेशन बहुत चले जेमति कि लेट्स से हम कहबा सेप्टेम्बर जून रे स्टार्ट हैला अगस्त जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर जाए रोचे पूरा 3-4 मास रोचे तो एवरेज हमें 4 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स देखा बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया रे बट आज वी मूव टू दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये 1.5 मंथ्स एंड 2 मंथ्स मैक्सिमम ता भितर केवल तुम थार डेजर्ट 1 मंथ ड्यूरेशन देखा मॉनसून रो as the duration is less ସେଥିପାଇଁ रेनफॉल अमाउंट भी कमिଯିବ सो ड्यूरेशन होची लेस ओनली 1 to 1 मंथ्स हम देखबा ସେଥିପାଇଁ टोटल अमाउंट रेनफॉल कमिଯିବ डेजर्ट हे जिवो है ना ये गोटे डेजर्ट हबार रीजन हूँ कि मॉनसून रो ड्यूरेशन बा ड्यूरेबिलिटी ऑफ मॉनसून इन दैट पर्टिकुलर रीजन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो बोथ हमें कहबा ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल बोथ एटा तुम कम रे रीजन रे ड्यूरेशन भी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल बोथ आर लेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन तबे हम मॉनसून को डिवाइड करबा ब्रांचेस रे फास्ट मॉनसून स्ट्राइक करे अंडमान निकोबर ध्यान से मन कहू मेनलैंड ऑफ इंडिया रे होची तमरा केरला बट ऑल ओवर इंडिया जदि देखबा दैट इज द अंडमान एंड निकोबर बुझ परछ नै मेनलैंड ऑफ इंडिया कहले केरला जदि तुमको कहजबो मेनलैंड ऑफ इंडिया
that is the Kerala. Kerala रे fast touch करिवो monsoon. But when it comes to the India concept जेतरा छो that is the Nicobar Island. Nicobar Island is the first island or the first point for the striking of monsoon. Then ଆସିବ Kerala. Next ଆସିବ ତମର Kerala. So monsoon first touch करे काहाकू Andaman and Nicobar को touch करे. Next ऐसे Kerala. But Kerala जति हम देखवा the mainland of India, then Kerala is the first. अब जा पड़िबन mainland of India कहले Kerala रहबो first. Now monsoon को हमें दी भागरे बा दीटा branches रे divide करे छी. One is Arabian branch and second one is the Bay of Bengal branch. So this would be branch 2 and branch 1. Okay. Anka vitru strong branch kota, the strong is Arabian. The Arabian branch is the strongest as compared to the Bay of Bengal branch. So jodi tumko pachara dita vitru strong branch kono, that means which causes more or the maximum rain or more rain kore kota, this branch. This Arabian branch causes more rain as compared to the Bay of Bengal branch. है ना, ये तुम्हारा रखो. ओके, दिस वन वुड बी देयर. तो टू ब्रांचेस को हमें देखे. टू ब्रांचेस तुमको एमसी ब्रांचेस काहे की होई छै, बिकॉज़ जेतबले एयर मास आसे ना मॉनसून इटसेल्फ पे हमें कोचे गोटे एयर मास, द एयर मूव्स ऑल ओवर द इंडियन ओशन, पूरा इंडियन ओशन रे मूव करके जाउ छी, है कि नहीं. तो ये एयर कोन है एबे दिस एयर, द एयर कमिंग फ्रॉम दिस साइड दे विल स्ट्राइक द वेस्टर्न पार्ट, द एयर कमिंग फ्रॉम दिस साइड दे विल end up by meeting the mainland of India. तले आगे हमें अरेबियन ब्रांच को पढ़िबा. अरेबियन ब्रांच द स्ट्रॉन्ग ब्रांच, ये सब डिवाइड हेछि तीनटा ब्रांच रे. गोटे होछि तमरो मालाबार, कोंकण एंड गुजरात. ये पुनी तीन भाग रे भाग हो. दिस अरेबियन ब्रांच इज डिवाइडेड इनटू थ्री मोर ब्रांचेस और द सब ब्रांचेस. One would be Malabar, one would be Konkan and तुम्हारा गुजरात. ओके, तीनटा सब ब्रांच रे डिवाइड हबो. ठीक अछि, थ्री सब डिवीजन रे आपको पुनी डिवाइड करबा में गुजरात ब्रांच, कोंकण ब्रांच एंड मालाबार ब्रांच. ये तीनटा भितर हम देखियो सब ब्रांचेस एंड आंक भितर सबटू स्ट्रॉन्गेस्ट होछि मालाबार ब्रांच. among them the strongest is the Malabar branch. अच्छा, तम मन को जो अनीता तम मन को आसुची ना आवाज आसुची समस्तों को. Yes sir. ओके, म्यूट करके रखिबो काना मु हेडफोन आने भी भूली जाइछि. सो दैट मीन्स आमे आपको कहले मालाबार ब्रांच बा केरला, देन कोंकण ब्रांच जोटा कि महाराष्ट्र ब्रांच, गोवा महाराष्ट्र को कोंकण कोस्ट को आजे, एंड गुजरात ब्रांच. तो दैट मीन्स ये तीन को अरेबियन ब्रांच को हमें सब डिवाइड करले तीनटा सब डिवीजन रखले. आंका भितर तमरो जो मालाबार रहिला, मालाबार इज द स्ट्रॉन्ग, देन आसबो कोंकण, देन आसबो गुजरात. ओके, पुणी आम मालाबार ब्रांच को एबे डिस्कस करबा ना. मालाबार ब्रांच जाको हमें कर्नाटक एंड केरला कोस्ट जो रेन होची ताको कोचे मालाबार कोस्ट. हियर हां Thickness of what? स्ट्रॉन्ग कहले अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बुझिपारछ ना, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ना. केरला रे हमें देखिबा केते सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर्स रेनफॉल करूची और प्लस 350-400 सेंटीमीटर्स रेनफॉल. व्हेन इट कम्स टू कोंकण कोस्ट हमको देखा जो 250 सेंटीमीटर्स प्लस रेनफॉल देखाइबो. गुजरात कोस्ट को आसीबो 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल. तो धीरे धीरे रेनफॉल आज वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट और टुवर्ड्स द लैटिट्यूड, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजिंग. गुजरात कोस्ट 100, देन तमर 250, देन 400 लाइक दिस. ये रहतो रेनफॉल. ओके, दिस आर द रेनफॉल. मतलब मॉनसून टाइम रे कोठी केते रेनफॉल होची, है ना. ना आंक भितर हम जदि देखिबा केरला ब्रांच इज द बा में जाको कोचे मालाबार ब्रांच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच. ना तार रीजन कोन, जदि तुमको कहआ जो द अरेबियन ब्रांच इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री मोर ब्रांचेस लाइक द हम कहबा मालाबार ब्रांच, कोंकण ब्रांच एंड द गुजरात ब्रांच. ओके, then why this one, why Kerala branch is so strong? It strong does mean amount of rainfall that causes there or that rain bearing clouds जाओ हमें कहूचे, है ना. स्ट्रॉन्ग रो मीनिंग होची सेया. तो विंड केते हमें देखबा ना केरला रे बामे जो मालाबार कोस्ट कथा कहूचे. व्हाई दिस मालाबार कोस्ट
is having maximum rain is ଜାଗାରେ କାହିଁକି କରୁଛି ତ ଆର ରିଜନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ଏ ରିଜନରେ ରେନଫଲ୍ ହବାର କାହିଁକି ଆଣ୍ଡ କେରଲା ସେଥିପାଇଁ କେରଲାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ବି ଅଧିକ ହୁଏ ମନସୁନ୍ ଟାଇମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ଅଧିକ ହୁଏ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ର ରିଜନ ହେଉଛି ଆମେ ରେନଫଲ୍ କେତେ ଦେଖିଲେ 450 ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସ ଅଫ୍ ରେନଫଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବା 400 ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସ କହିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ତ କହିଥିଲି ନା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରେନଫଲ୍ ବଢ଼ି ହେଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯଦି ରେନଫଲ୍ ଏବେ କେରଲାରେ ରେନଫଲ୍ କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଉଛି ଲିଙ୍କ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ନାଉ ୱାଇ କେରଲା ଇଜ୍ ହାଭିଂ ମୋର୍ ରେନ୍ ତ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ because of mountains lofty mountain because of lofty mountains like Anaimudi, Agastyamalaya है ना नीलगिरी these are the ଯେତେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଏ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ କେରଲାରେ ତ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ରେନଫଲ୍ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ବିକଜ ମନସୁନ୍ ଗୋଟେ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନ୍ ମନସୁନ୍ କ'ଣ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଓରୋଗ୍ରାଫି ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ବ୍ୟାରିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାଚୀ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ର ମିନିଂ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ है ना ओरोग्राफिक बा आम कहवा अरे एମାନଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ରହିବେ କେରଲାରେ କାହିଁକି ହେବ ବିକଜ ଅଫ୍ लफ्टी माउंटेन से ना लिखिदेव किए तुम लिख कि आनामलई अगस्त्यमलई अनाईमुड़ी है ना दीज आर द हाईएस्ट पिक सब ये अच्छी तो जेहेतु माउंटेन जिते बड़ बड़ रब्स्ट्रक्शन से क्रिएट कर फिजिकल बैरियर दैट मीन्स ये मैंने कौन कर बैरियर क्रिएट कर मोर द बैरियर मोर द रेन हाँ कि नहीं सो मोर द बैरियर मोर द रेन तो रेन कौन रुम मोर बैरियर मोर रेन बस सिंपल आम आपको कहीपर माउंटेन्स ना लिखे ये फास्ट पॉइंट ये रेनफॉल हबार सेकेंड कज कौन केरला कहीं अधिक रेनफॉल हो बिकज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर प्रॉक्सिमिटी टू वाटर वाटर पाखरे अच्छी जेहेतु वाटर पाखरे अच्छी मॉइस्चर अधिक मोर द मॉइस्चर मोर द रेन आज इट क्लोज टू द वाटर सो मॉइस्चर कंटेंट आम जी देखा the moisture content would be more the moisture more the rain this is the second reason why Kerala experience heavy rain then the third and the most important reason is that the striking angle of the air masses this is very important the striking angle of the air masses jodi ame koiba striking angle of विंड भी तुम कहीपर स्ट्राइकिल एंगल कहले कौन लेट से केरला ये जदि आम देखा केरला रे हियर विंड इज स्ट्राइकिंग लाइक दिस ध्यान से देखो द विंड इज स्ट्राइकिंग एंड हियर विंड इज स्ट्राइकिंग हियर विंड इज स्ट्राइकिंग लाइक दिस तो विंड जोटा आसूची ये परपेंडिकुलर नियर अबाउट 90 डिग्री एंगल करके स्ट्राइक करूची मॉनसूनल विंड आउ जेतेबेले 90 डिग्री एंगल रे कौन कर स्ट्राइक कर दैट इज द भाव दैट मीन्स आम कह कनसेंट्रेशन जो अच्छी सी बढ़ीज कि कनसेंट्रेशन ऑफ एयर मास से बढ़ीज कहीं जो तुम स्लोप बा एंगल करके टच कर डिफ्लेक्ट हो पड़ो तो एयर मास वुड बी डिफ्लेक्टेड बट जो 90 डिग्री एंगल रे टच करुच्ची दैट मीन्स कनसेंट्रेशन ऑफ द एयर मास वुड बी मोर आउट देयर एज द मोर एयर masses मोर रेनफॉल बुझा पड़ोनी सो बिकॉज ऑफ द एंगल सो एज द एंगल इज 90 डिग्री और द परपेंडिकुलर that is why here amount of rainfall would be more as the air will be trapped there बुझी पार्छ कि नहीं एयर जदि कौन कर एंगल करके आसो अधिक एंगल भाव 70 80 30 तो से डिफ्लेक्ट होगी पड़े ये डिफ्लेक्ट हेनी ये डायरेक्ट कौन हो मेकानिकाली अपलिफ्ट हो बुझीपार कि तेणुक एंगल जिते हम जमी गोटे लाइट भाव लाइट को जब आम सैड कर पकईवा अधिक एरिया कवर कर बट लाइट को जब स्ट्रेट पकईवा कम एरिया दैट मीन सेम एनर्जी इज कनसेंट्रेटेड इनटू स्मॉल एरिया तो लाइक दिस जो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करुच्ची अमाउंट ऑफ रेनफॉल वुड बी मोर ना बुझा पड़ोनी सो दैट इज वाई बट इंडिया बाकी कौन से रीजन रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे ना
and as a reason this region experience maximum rainfall. So angle of wind is one of the important factor after from the proximity and lofty mountains. Okay, then why another facts ke why Kerala or the Malabar coast experience more rain, that is the low pressure, that is the what, low pressure during the monsoon. Monsoon type रे low pressure भी formation होती like the tropical depression में कई बार. So that low pressure will enhance the amount of rainfall in this coastal region. ना बुझा पड़ेगा, that will enhance the coastal region रो rainfall बढ़ेगा, है ना. प्लस ये तो आम नेक्स्ट आउ कौन देखिपर आउ किसी कजेस हो पार, बिल्कुल हो पार बिकज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑलरेडी कौन अच्छी एवरग्रीन. सो केरला डज हैव द नेचुरल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो मोर एवरग्रीन फॉरेस्ट जेहेतु अच्छी, दैट इज एवापोर ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. Evapotranspiration would be more. The more the evapotranspiration, more the moisture in the atmosphere, and more the condensation, more the rain. ना बुझा पड़े ये कमती कनेक्ट कराऊँगी नेचुरल वेजिटेशन बिकॉज ऑफ द थिक नेचुरल वेजिटेशन इन द वेस्टर्न घाट एंड पर्टिकुलरली आम केरला रे कहबा द एभापो ट्रांसपिरेशन बा ट्रांसपिरेशन जहाँ को आम कहूचे है ना, फोटोसिंथेसिस, through the photosynthesis transpiration habo, and that transpiration is ejecting moisture into the atmosphere. It is the forest achi, so that amount of, I would say, the moisture will be more, and that will condense into the form of rain. ଏବେ ହେଇପାରିବ କେରଳାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି, ଆରାମସେ ଦେଖେଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ମ୍ୟାପ୍ ଡ୍ର କରିଦେବ ଦେଖେଇଦେବ, है ना, कि बिकज ऑफ लफ्टी माउंटेन्स, माउंटेन दी तीन ना लिखिदेल. प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वाटर मॉइस्चर अधिक ये रहा, ह्यूमिडिटी. देन आम कह एंगल ऑफ द विंड और द मॉनसूनल विंड, दैट विल कॉज मोर रेन. देन लो प्रेशर एंड नेचुरल वेजिटेशन, ऑल दिस रीजन्स आर मेक्स द केरला वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस अराउंड द अर्थ. ना बुझा पड़ोनी. जदि रेनफॉल अधिक है, नेचुरल वेजिटेशन कौन होगा, एवरग्रीन. रेनफॉल सॉइल कौन हम कही, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल विल प्रिवेल इन दिस रीजन, laterite. मुझे more rainfall, more temperature, alternative dry and wet condition means laterite soil will be there. And apart from that, some region will be swamp condition. Coastal region रो swamp भी देखा जाए. So Kerala will have swamps and laterite soil. Forest रो evergreen. बुझे पड़ता नहीं. Flood हबो से केरला रे flood होची. प्रत्येक वर्ष केरला रे flood होची. प्रत्येक वर्ष landslide होची. लैंडस्लाइड भी होची, एंड दिस लैंडस्लाइड भी कजेस मु पढ़ी तुमको. दैट मीन्स केरला रे लैंडस्लाइड हबार कजेस होची मॉनसून, फ्लड हबार कजेस होची से या बुझी पड़छन. जे डिफॉरेस्टेशन वगैरह हैला ताले ये आकु भी हमें लिंक करके पढ़ी देले, है ना, बुझी पड़छन. एंड बिकॉज ऑफ द हिली माउंटेन्स रीजन, टी, कॉफी, रबर ये सब चाष करा जाउची, बुझी पड़छन. ये रहिला तुम्हारा केरला. नाउ कम्स टू द मालाबार कोस्ट. हाँ, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट, तो ये हमें केरला रे देखिले, दैट इज द गैप्स हियर. एठी दीटा गैप अछि, गोटे हला पाल घाट, ऑलरेडी मु तुमन को पढेछि, पाल घाट एंड सेंकोटा गैप. सेंकोटा गैप, ये जो गैप अच्छी, ये गैप देखी मॉनसूनल एयर जाइए तमिलनाडु वेस्टर्न पार्ट रे पहुँचवा बा इंटेरियर तमिलनाडु पहुँचब ना, बुझा पड़ोनी. थ्रू दिस गैप द विंड विल पास टू द तमिलनाडु इंटेरियर पार्ट, बुझिपार. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ गैप, माउंटेन गैप रो एयर गुड़ा कौन कर, द एयर मासेस विल मूव थ्रू दिस गैप, है ना, एमती एंटर कर थ्रू द लेट्स से सेंकोटा गैप्स, थ्रू द पाल घाट गैप्स, कोइम्बटोर रीजन ये सब अच्छी ना, सेलम, कोइम्बटोर, दीज आर द रीजन. एठी तुम कौन कर रेन. दैट मीन्स तमिलनाडु रे भी इंटेरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु दैट इज गेटिंग रेन बिकॉज ऑफ दिस गैप्स इन द माउंटेन लाइक पाल घाट एंड सेंकोटा गैप, बुझा पड़ो ये, है ना. एंड हेन्स तमिलनाडु रे रेनफॉल हम केते 100 सेंटीमीटर और लेस देन 100 सेंटीमीटर, बिकॉज as the wind is coming from the western side, the Tamil Nadu is on the eastern side or the leeward effect तुमको देखा जाओ, or that will have the leeward effect. Already मु पढ़ी छी, as the mountain is like the air is coming, this would be the leeward. ये रहा तुम्हारा leeward. Hence the amount of rainfall will less than 100 centimeters in Tamil Nadu. प्लस तमिलनाडु आउ कहीं रेनफॉल कम होची, देखो एक तो होची जो विंड एपटे आसला एटी स्ट्राइक कर जिवो ना, दोज विंड कमिंग लाइक दिस हियर इट वुड बी पैरेलल, ये पैरेलल है कि पड़ी जिवो. दैट मींस हमें किछि विंड पैरेलल ही जाउची,
କିଛି ୱିଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି obstruct ହେଇଯାଉଛି leeward effect. So because of parallel effect and leeward effect, Tamil Nadu is getting less rain during the monsoon. ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ why Tamil Nadu experience less rain during the monsoon, why Kerala experience the maximum, though they are situated in same latitude. Same latitude ଅଛି ଆଖପାଖ ଅଛି, but despite the fact ତାମିଲନାଡୁର ପୁରା exceptional rainfall ହେଉଛି and here is the ଓଲଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି deficient rainfall in this region. The point one to be the leeward effect because of the lofty mountains here, and point two is the parallel air masses. Here would be parallel, that is the what parallel air ତମେ କହିପାରିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ହେଇପାରିବନି ତ ସେ ମୁଭ୍ କରିକି ପଳେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି. And this is the two reason କି why Tamil Nadu experience less rain. One is leeward, one is parallel of the wind. Then ସେଥିପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ coast remain dry. तो ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ CS type of climate ବା Mediterranean type of climate. That is why Tamil Nadu coast remain dry and dry evergreen forest ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିଲେ forest ରେ dry evergreen forest found in this region. So this kind of climate is known as CS type of climate or Mediterranean type of climate. So Tamil Nadu is the only state in India which experience Mediterranean climate in India. Mediterranean climate କହିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ Mediterranean climate କହିଲେ ସମରଟା କେମିତି ରହିବ ତମର ଡ୍ରାଏ ରହିବ ସମର ଡ୍ରାଏ ୱିଣ୍ଟର ୱେଟ୍ କହିଲେ ୱିଣ୍ଟରରେ ରେନଫଲ୍ ହେବ है ना. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्षेत्र रिट्रीटिंग मॉनसून रेन करेइबो. दैट मीन्स मेडिटेरियन क्लाइमेट हैला समर रे हमर रेनफॉल केते हुए समर रे बट तांकर समर रे रेनफॉल हबन तांकर विंटर रे रेनफॉल हबो रिट्रीटिंग मॉनसून. दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट को कहजे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बा सीएस जाको कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अनुसार आम कहू सीएस टाइप ऑफ क्लाइमेट बुझिपार ना कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अनुसार सीएस आउ केरला रोचे एएम कहले मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट. जदि तुमको कह एमती क्वेश्चन आसबनी बहुत डिफिकल्ट हो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कि केरला रो कौन हम एएम कहले मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट ए फॉर ट्रॉपिकल एम फॉर मॉनसून बुझिपार ना ए ए ए एम टाइप ऑफ एम टा स्मॉल एटा कैपिटल ए कहले ट्रॉपिकल टाइप ऑफ एम कहले एम डिनोट्स टू मॉनसून. तो एठी ए एम लिखिबो एठी कोन लिखिबो सी एस बुझिपार ना सी कहले मेसोथर्मल एंड एस कहले समर ड्राई एस फॉर समर ड्राई जो सी पे नहीं से फॉर मेसोथर्मल है ना मेसो माइक्रो तीन टा थाए बुझिपार सी फॉर मेसोथर्मल एस फॉर समर ड्राई. अब आम देखिले ये रेनफॉल कम हो मॉनसून टाइम रे कहले ड्राई रोचे देन आम कर्नाटक ये थिला तुम केरला रे फ्लड लैंडस्लाइड सब आम रिलेट कर परिबा आ सहित टी कॉफी रबर कहीं होचे देख जदि तुमको क्वेश्चन करा कि वाई कर्नाटक केरला तमिलनाडु दे आर ग्रोइंग टी कॉफी रबर बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल कारण टी कॉफी रबर पर दरकार माउंटेन रेनफॉल टेम्परेचर ये लिखी दे टी कॉफी रबर पर कौन दरकार कंडीशन जो एमाने कहीं वाई टी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किए बेंगल ना आसाम किए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी रखो obviously Assam is the largest producer बुझिपार Assam then Bengal. The tea production टी कॉफी एंड रबर है ना. प्रथम कथा ये तीन टा होची प्लांटेशनल क्रॉप्स तीनटा जाक होची प्लांटेशनल क्रॉप्स और आंकर ग्रोथ पई दरकार कंडीशन जो दरकार से होची माउंटेन रहिबा दरकार बा में स्लोपी एरिया दरकार तापे है ना. तो माउंटेन और स्लोपी एरिया हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल
एरिया कहले मोर देन 1500 टू 1500 500 टू 1500 कौन रहिबो मीटर अल्टीट्यूड हाइट दरकार देन इरिगेशन ओके चीप लेबर लोमी सॉइल रेड सॉइल भी हो पारिबो सो दीज आर द ये तुमको कंडीशन दरकार फॉर द ग्रोथ ऑफ टी कॉफी रबर पाई से आसाम रे रेनफॉल अधिक केरला रे रेनफॉल अधिक तमिलनाडु रे रेनफॉल अधिक दैट इज व्हाई टी कॉफी रबर ये ग्रो करूछन्ति ना बुझा पड़ोनी नॉर्थ ईस्ट रे सो ये हूँ रीजन बेंगल रो भी तुम जो दार्जिलिंग रे रेनफॉल अधिक सो से बुझिपार तो ये रहा कंडीशन ये तुमको क्रॉप पढ़ा हम क्रॉप पढ़ाइले कंडीशन सब कहीदेवी जहाँ भी हो तो ताको हमें ये लिंक करिपरिबा कि हाँ ये मानक भी हमें लिंक करिपरिबा तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हूँ तुम आसाम बेंगल कर्णाटक केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आमर ओडिशा रे भी हुए कोरापुट रे ओडिशा रे भी रबर हुए केउझर मयूरभंज ये सब रीजन रे रबर भी कल्टीवेशन हुए तो ये देखिले हमें दैट मीन्स आमर ये ब्रांच को तीन भाग रे भाग कले दैट इज द केरला ब्रांच देन आसो कोंकण तो कोंकण कोस्ट आसो देन गुजरात कोस्ट हमें देखिले सो दीज आर द हमें ये ब्रांच को देखिले अच्छा ये थिला तुम केरला ब्रांच को देखिले मॉनसून रो ना वी विल कम्स टू द कोंकण ब्रांच ऑफ मॉनसून गोटे गोटे ब्रांच को हमें देखा कोंकण ब्रांच रेनफॉल वुड बी मोर देन 250 सेंटीमीटर्स हियर सो एवरेज रेनफॉल इन द कोंकण कोस्ट वुड बी 250 सेंटीमीटर्स annual rainfall during the monsoon now here this monsoon through the gap जेमती तमरो कोन अछि एठी को गैप घाट अछि एठी तमरो घोर घाट खाल घाट घोर घाट खाल घाट का को कनेक्ट करछि पुणे को नासिक को घोर घाट का करुच्ची पुणे को तो थ्रू दिस गैप द एयर विल मूव एंड थ्रू द रिफ्ट वैली नर्मदा ताप्ती जो रिफ्ट वैली अच्छी एंड थ्रू दिस गैप द दिस ब्रांच ऑफ मॉनसून दे विल एंटर इनटू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तांस मन कहबो द कोंकण ब्रांच ऑफ मॉनसून थ्रू द गैप्स लाइक थाल घाट पाल घाट Narmada Rift Valley, Tapi Rift Valley. This monsoonal wind will deep move into the MP, Chhattisgarh, है ना ये रीजन रे पहुँचबो महाराष्ट्र इन दिस रीजन रे पहुँचबो एंड दैट विल कॉज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स ताले ये रीजन रे केते 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल करबो कोठी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश रो एवरेज रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज 100 रेनफॉल दैट डज नॉट मीन्स कि सब जगह 100 रेनफॉल होची कोठी 50 हे पारे 60 हे पारे कोठी 150 हे पारे बुझ परछनी तो मध्य प्रदेश रो एवरेज रेनफॉल होची 100 सेंटीमीटर बट जदि आम कोंकण कोस्टल रीजन कथा नहीं जुआ जमती तुम फ्रॉम गोवा टू नहीं कि बॉम्बे जाए दिस रीजन विल एक्सपीरियंस मोर देन 200 प्लस सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल बट इंटेरियर रेनफॉल कमी जीवो बुझिपारछ कि नहीं तो व्हाई इंटेरियर रीजन लेस रेनफॉल रहिबो बिकॉज as the region is away from the coastal so the humidity will reduce ना ना जेते बळे आमे कहबा आज वी आर मूविंग इनटू द डेप्थ पार्ट जेते बळे आमे कहबा इंटीरियर पार्ट को जाउछे धीरे धीरे मॉइस्चर कमी कमी जीवो हां कि नहीं सो as the moisture decreases obviously the rainfall will decrease up to आमे कहबा 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल रहेगा प्लस आउ गोटे कारण कोन लीवार्ड वेस्टर्न घाट इज हियर वेस्टर्न घाट है ना बिकॉज ऑफ द आम कह वेस्टर्न घाट तार लीवार्ड इफेक्ट भी देखा से भी रेनफॉल कमी सो सेंट्रल इंडिया लाइक एमपी छत्तीसगढ़ दिस रीजन दे आर रिसीविंग 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल बिकॉज ऑफ लीवार्ड इफेक्ट एंड द अवे फ्रॉम द कोस्ट कारण तुम ईस्टर्न साइड रू आसले ईस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड रू आसले वेस्टर्न घाट that is why in between region will have leeward effect तो ये कौन देखा leeward effect तुमको देखा
लीवर्ड ଦେଖାଯିବ। ओके डन। तो ये आम देखिले तो कंकन ब्रांच को मुझे कहली तो मन रख तेणुक जमी विदर्भा रिजन होगला कि मराठावाड़ा होगला कि लाथुर रिजन होगला ये सब रिजन रे कौन देखा रेनफॉल कम देखा बिकज ऑफ कौन रहा बिकज ऑफ तुम लीवर्ड इफेक्ट है ना नॉर्दर्न कर्नाटक है ना दिस लाइट कलर ये जो लाइट कलर देखुच ना दिस इज डेफिशिएंट रेनफॉल रेनफॉल हियर लेस देन 75 सेंटीमीटर्स जो लाइट कलर पैचेस देखा जाऊँगी रेनफॉल बहुत कम है ना जो लाइट कलर देख रेनफॉल कमी जाऊँगी एटी देखुच ग्रीन कलर डार्क कलर दैट मीन्स रेनफॉल अधिक है ना जिते लाइट कलर देख रेनफॉल कम ये सब अधिक लाइट कलर सब लीस्ट रेनफॉल हियर बुझिपार तो दिस रीजन इज लेस रेनफॉल ये देख बट हिमालयन रीजन रेनफॉल अधिक हो बिकज ऑफ लफ्टी माउंटेन्स अच्छी ओडिशा रे भी ठीक ठाक अच्छी ये रीजन रे देखिपर है ना तो ये थे आमर कंकन ब्रांच देखिले 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल रोचे एवरेज रेनफॉल और 200 टू 250 रहिबो as we move to the interior part of the continent है ना so rainfall will decreases because of the region is away from the sea जेहेतु away from the sea the coastal region so moisture will decrease and the leeward effect this is the two region that the what in this region there would be less rainfall है ना ये थी then as for Gujarat coast को ऐसी बात है the rainfall would be 100 centimeters the average rainfall is 100 centimeters Gujarat coastal जदि आम देखा the average rainfall is 100 centimeters ओके ना 100 सेंटीमीटर गुजरात रे कम कहीं होची कारण दिस इज द आपको कहते गुजरात पेनिनसुला एंड दिस गुजरात पेनिनसुला रे रेनफॉल कम हुए एथि बिकज डज नॉट हैव एनी माउंटेन एते खास नहीं ये रीजन रे खाली गोटे माउंटेन अच्छी ता ना है गिर फॉरेस्ट एंड द गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क वेयर द एशियाटिक लायंस रिजाइड्स दैट इज द होम टू द एशियाटिक लायंस हियर गोटे अच्छे गिर माउंटेन बुझीपार नहीं गिर माउंटेन केवल से गिर माउंटेन जो रेनफॉल ठीक ठाक हो अदरवाइज दैट रीजन इज हैविंग लैक ऑफ रेनफॉल इन दिस पर्टिकुलर रीजन तेणु रेनफॉल एटी 100 और लेस देन 100 सेंटीमीटर्स इन द गुजरात पेनिनसुला एंड गुजरात इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर apart from the peninsular आर गोटे सब पेनिनसुला इटसेल्फ पेनिनसुला गुजरात पेनिनसुला बुझीपार देन ये आसूची तुम ये ये गुजरात देखले ना गुजरात ब्रांच ऑफ मॉनसून जो एंटर करुच्ची हियर अरावली इज रनिंग लाइक दिस अप टू अरावली को जाए जाइए अप टू दिल्ली है ना एठी को कौन कहे दिल्ली रिच जो रायसीना हिल बोली कहुए जो राष्ट्रपति भवन अच्छी रायसीना हिल रायसीना हिल एंड द रायसीना जियोपॉलिटिक्स डायलॉग भी अच्छी जा भी हो as the monsoon enter the monsoon also move parallel to the mountain किछि एठी strike करिवो and rest of the mountain would be parallel as the mountains are parallel and does not get any kind of obstruction from the physical barrier desert the physical feature less पूरा तो एठी तो obstruction हबो नहीं wind को तो rainfall हबो कोड ताले रेनफॉल ओनली डिपेंड्स ऑन द लो प्रेशर जदि लो प्रेशर डेवलप है रेन हम अदरवाइज विंड विल मूव अक्रॉस द रीजन एमती मूव कर पड़े जाकि डायरेक्ट कौटी स्ट्राइक कर हिमालय रे हाँ हिमालय रे रेनफॉल अधिक हम ना बुझा पड़ोनी ये मॉइस्चर ऑलरेडी अच्छी या पाखे ये नहीं कि जाऊँगी बट इट्स नॉट गेटिंग बैरियर आपको बैरियर मिलूनी दैट इज वाई इट्स नॉट कॉजिंग द रेन unless and until it is not created any kind of or it is not strike any physical barrier that will move तो ये एमती मूव करके पड़ेब पूरा उत्तराखंड जाकि पहुँचब ना उत्तराखंड जो जाकि पहुँचब उत्तराखंड इज हैविंग लॉफ्टी हिमालयस ताको तो क्रॉस करके जाई परिबनी तो जहाँ मॉइस्चर थिबो दैट विल कॉज रेन इन उत्तराखंड 200 सेंटीमीटर्स रेन अब ना बुझा पड़ोनी सब मॉइस्चर जहाँ थी उत्तराखंड रे खत्म हो इन फॉर्म ऑफ रेन एंड दैट विल कॉज क्लाउड ब्रस्ट इन उत्तराखंड ओके सो हियर इन राजस्थान द विंड इज पैरेलल एंड जस्ट बिलीव करो इफ लेट्स से इफ हिमा जो अरावली वेयर लाइक दिस लाइक वेस्ट एंड ईस्ट if that was running east west the east west है ना that would have caused the barrier that could have caused the
barrier to this region, and would have this region would have experienced quite good amount of rainfall. As the Himalayas, sorry, I would say the Aravalli is parallel to the wind, that is getting least friction and the least obstruction. Hence only this part of Aravalli जो तार एठी किछि यार तो एठी स्ट्राइक करिवो ना आ किछि साइड हेजिवो, तेणु करी ए रीजन रे रेनफॉल देखा जाए, दैट इज द गुरु शिखर रीजन है ना, माउंट आबू गुरु शिखर. दिस रीजन विल गेट रेनफॉल है ना, क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अदरवाइज इट विल बी पैरेलल एंड मूव अक्रॉस द डेजर्ट टू स्ट्राइक द हिमालयन पार्ट एंड देयर दैट विल कॉज द रेन. ना बुझा पड़े क्या से ये डेजर्ट होची एक रे मु कहीदी लास्ट रे मनसून पहुँचब एंड जल्दी विड्रॉल करूँ, दुई रे पैरेलल होकी जाऊँगी, ये सब ऑलरेडी डेजर्ट फॉर्मेशन रे पढ़ाई, हाँ कि नहीं, जोटा कि प्रूफ हो. नाउ दिस वाज द वेस्टर्न बा अरेबियन ब्रांच रो में खत्म हो गला, बुझिपारछ अरेबियन ब्रांच ऑफ मानसून. नाउ वी विल कम टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून. बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून जे आम देखा है ना, दैट मीन्स आम गोटे गोटे ब्रांच को डिटेल डिस्कसन करूचे, कौटी केते रेनफॉल होची कौन होची डिटेल डिस्कसन करूचे ना. बे ऑफ बंगाल ब्रांच को आम डिवाइड करबा केमिति देखो. वन ब्रांच इट विल डीप इनटू द यूपी बिहार ओडिशा, ये हला ब्रांच 1. This would be branch 2 Bengal branch, that would be branch, and branch 3 आम केवल नॉर्थ ईस्ट है ना. तीनटा ब्रांच आम ताको डिवाइड करियो, पुनी फर्दर वी विल डिवाइड द बे बंगाल ब्रांच इनटू 3 मोर ब्रांचेस. वन वुड बी हियर ओडिशा आंध्र प्रदेश, ओडिशा आंध्र प्रदेश गोटे ब्रांच हे जिवो, गोटे ब्रांच हे जिवो बेंगल बिहार यूपी, आ गोटे ब्रांच हे जिवो नॉर्थ ईस्ट. नाइ परिबनी 3 मोर ब्रांचेस रे आम ताको डिवाइड कले, ठीक अच्छे. द बेंगल ब्रांच दैट विल कॉज रेन अप टू यूपी, माने बेंगल रे एंट्री कला परे as the air enters here it will move into the deeper part of यूपी को जाके पहुंचबो. बट ये जेतबे एंट्री मारी की जाउची अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल डिक्रीज as the amount of moisture will reduce. the यूपी that means eastern यूपी बिहार Bengal, the rainfall will decrease from Bengal towards the western UP, isn't it? Obviously, let's say if I say the Bengal is receiving 200 centimeters of rainfall, Bengal receives what? 180 to 200 centimeters of rainfall Bengal receives, and the Bihar will 100 and 120 like this, 150. UP out 100, western UP आउरी कमी 50 है, and that is why western UP होची arid region. कारण ये ब्रांच जो एंटर करके जाऊँगी वेस्टर्न यूपी कहले कौटी वेस्टर्न यूपी क्या को टच करी, हरियाणा पंजाब को टच करी, एंड देयर द रेनफॉल वुड बी 50 सेंटीमीटर्स. ईस्टर्न यूपी रे 100 सेंटीमीटर्स, बिहार रे 120 150, बेंगल रे 200 सेंटीमीटर्स, ओडिशा रे 150 100 to 150 सेंटीमीटर्स, आंध्र प्रदेश 100 सेंटीमीटर्स. These are the rainfall in this particular region. आपको ड्रॉ करिया पड़िबो, मैप ड्रॉ करी लिखिया पड़िबो. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल. कारण आपको जानिले तुम सॉइल कहि परिबो, क्रॉप्स कहि परिबो, नेचुरल वेजिटेशन कहि परिबो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहि हबो, ड्रॉट एरिया कहि हबो, बुझि परछ कि नहीं. तेणु करिकी माउंटेन जानिले रेनफॉल कोठी हबो हम कहि परिबा. तो ये सब जानिले क्यूमुलेटिवली वी विल फाइंड आउट कि दिस रीजन इज द पुअर रीजन, दिस रीजन ये सब हमको मिल जिवो. हाँ कि नहीं, ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट जदि मु कहबी वाई बेंगल इज डेभलप्ड, कारण बेंगल रे फर्टाइल सॉइल अच्छी, रेनफॉल ठीक ठाक अच्छी है ना, एवर वाटर भी ठीक ठाक अच्छी, वर्ष सारा पानी भी ठीक ठाक अच्छी, इन फॉर्म ऑफ रिवर भी अच्छी. तो ओबियसली जब सब जोग्राफिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल क्यूमुलेटिवली हम देखो ठीक ठाक अच्छी तो डेभलप हम ही हम ना. इन द टॉप ऑफ दैट मिनरल्स भी अच्छी, जमी रानीगंज होगला ये सब रीजन रे कौन मिनरल भी मिलूँ तांको. जदि सबू अच्छी कहीं डेभलप हेनी ना, बुझा पड़ोनी. पुणी हिस्टोरिकल आम कह एत बड़ सहर अच्छी कोलकाता, तो दैट मीन्स आम देखले ये 100 सेंटीमीटर्स सॉरी 200 सेंटीमीटर्स बेंगल, देन इट वुड बी 120 बिहार, देन 100 ईस्टर्न यूपी, 50 रेबो वेस्टर्न यूपी. द रेनफॉल डिक्रीजेस लाइक दिस. ओके, बट जो बेंगल ब्रांच दार्जिलिंग रे पहुँचो ये 250 300 400 सेंटीमीटर्स रेनफॉल क्रिएट कर माउंटेन जगह, कारण प्लेन एरिया रे कम रेन हम, माउंटेन रे 400 centimeters, 250, 300 centimeters. On an average, पूरा north east of India, they receive 300 centimeters of rainfall and more. Average यदि rainfall आम देखा पूरा north east रो more than 300 centimeters rainfall. किछि किछि जगह रे 1000 11 1200 like मौसिराम and चेरापुंजी के थे
1200 centimeters, the wettest place on the earth, Mosiram. ମସିରାମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଠି କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମକୁ 1200 ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସର ଦେଖାଯିବ। ତ ଇଏ ତୁମ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କାହିଁକି ହୁଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେନଫଲକୁ ପୁଣି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଦିସ୍ ରିଜନ୍ 180 200 ଦେଖାଯିବ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା। ଦେନ୍ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲରେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଖାଯିବ କୋଷ୍ଟାଲରେ। ମାଲକାନଗିରି ବଗେରା 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଖାଯିବ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ 100 ଦେଖାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ବି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଛି ମାନେ ସେଇଠି ତୁମକୁ ଅଧିକ ରେନଫଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଏଇ ପୁରା ମାଲକାନଗିରିଠୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କେଉଁଝର, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟଟା ଅଧିକ ରେନଫଲ୍ ହେବ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବଗେରା, ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ୟାଙ୍କର ରେନଫଲ୍ ପୁଣି କମିଯିବ, 100 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲରେ ବି ତୁମକୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କାହିଁକି ୱାଇ ମସିରାମ ଚେରାପୁଞ୍ଜିରେ ଅଧିକ ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି, ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ है ना। तो ये भी हमें देखिए नेक्स्ट हम देखिए चेरापुंजी। चेरापुंजी एंड मौसीराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ ना। ये कहीं देखा जाए ये तीन टा माउंटेन अच्छी गारो खासी जयंतिया ऑलरेडी आम पढ़ीचे ना। गारो खासी जयंतियार सेप अच्छी एमती सेप कहले आम आपको केमती देखा कनकेव आपको कहे फनल इफेक्ट। आपको आम कौन कहू फनल इफेक्ट और वी विल कॉल इट द फनल इफेक्ट। फनल इफेक्ट फनल केमती थाए ना बुझा पड़े आपको आम कौन कह फनल इफेक्ट आम कहीपर। ठीक अच्छे। चेरापुंजी कौन देखा जाए फनल इफेक्ट ना। फनल इफेक्टर अर्थ कौन आम जाना ना। आज द एयर मूव्स द एयर विल ट्राप हियर। देख ये जो माउंटेन एमती अच्छी जो सेप अच्छे ना, आज द एयर मूव्स द एयर विल ट्राप हियर। एयर कौन हो ट्राप हो एयर बाहरी पार ना। देयर वुड बी नो एस्केप टू द एयर। तेणु जी मॉइस्चर जो दैट वुड बी ट्रापिफाइड हियर पूरा ट्राप्ड हो द एयर विल बी ट्राप्ड हियर। तो पूरा एयरटा कौन हो ट्राप्ड हो एंड दैट विल कॉज हेवी रेन। दैट विल कॉज heavy rain. Okay, nahi? That will cause heavy rain. So air will trap and that will cause the heavy rain. So because of the location of the mountains here, Garo Khasi joint जो shape रही, as this branch of monsoon they enters, that would not be able to escape से एरिया रू जाई परिबो नहीं। पुनी एमानकर हाइट भी अधिक। मेघालय अर्थ कौन द स्टेट ऑफ क्लाउड। मेघालय मीनिंग होची स्टेट ऑफ क्लाउड। मेघालय बा the state of cloud. That means ये जो तुम्हारा funnel effect रहेगा, because of this funnel effect that will cause the maximum rain in this region and lofty mountains है ना, Garo Khasi Jointia. Okay, so because of these two region, this region will have more rainfall. And here आमे देखिबा in this region also। तो ये अच्छी तुम्हारा आराका योमा माउंटेन। एठी अच्छी गोटे माउंटेन एटा कौन म्यांमार। दिस वन इज व्हाट म्यांमार एंड म्यांमार अच्छी आराका योमा माउंटेन। आराका योमा माउंटेन लेट्स से एमती मॉनसून जीवो एमती मॉनसूनल विंड इज मूविंग लाइक दिस इट विल स्ट्राइक एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दिस रीजन। ये डिफ्लेक्ट होइकी जीवो ना बुझा पड़िबोनी। तेणु ये जो आराका योमा माउंटेन ये कनकेव शेप रो अछि। जदि ये कन्वेक्स शेप रे रहितंता ताले डिफिकल्ट हेइथांता मॉनसून पे। as this one is in the shape like this, here is the mountain achi, as the wind is moving it would be deflected towards like it would be deflected ना बुझा पड़िबोनी। so Araka Yoma जो mountain अच्छी this one also a gifted mountain for India बुझ पारछ ना नहीं। Araka Yoma mountain and here the wind will strike and that will deflect towards India। तेणु ये जो Araka Yoma mountain itself the running change of पूर्वांचल the running chain of पूर्वांचल mountain। ये पूर्वांचल जो mountain अच्छी तार running change होची chain that would be running chain is Araka Yoma mountain। and that mountain as the mountain shape is in the concave shape that will deflect the air masses of the monsoonal wind towards the India and खास करके Bengal and northeast part।
Hence, that will cause rain in this portion of Odisha, Bengal, Bihar, all this region. Had it not be there, just believe Karo, had it not be there, the wind could have moved like this. As the lofty mountains is here, the Arakama, that is deflecting the air masses towards the India. And this region is getting monsoonal rain and the wind. Now, ବୁଝିପାରିବନି otherwise it could have moved in a straight path and that would have entered into the deeper part. Hence this one is the leeward ଯେହେତୁ ଏଠି mountain ଅଛି ତାର leeward ଟା କମ rainfall ହେବ light color ହେଇଯିବ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଏବେ and as this one is the here is the mountain the leeward side would be light color ହେଇଯାଇଛି light color that is the what less rain because of the leeward and the air will deflected towards India and this region will raise maximum wind concentration and the rainfall होप ए बुझा पड़ जो कहीं कौटी केते रेनफॉल होची सब डिटेल में डिस्कस कले है ना सब रीजन कौन लेट्स से तुमको कह जा कि व्हाई अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम गेट मैक्सिमम रेन बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हिमालय एठी कौन अछि हिमालय दोज एयर मास इज मूविंग अल्टीमेटली दे विल स्ट्राइक वेयर हिमालय तापर तो जाई परिबनी तापर तो टाइबेट अछि ना तो टाइबेट रे तो रेनफॉल हबनी ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ and this is like a wall structure ହେଇକି ଅଛି ଏୟାର ତ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ so all the rainfall will happens in the southern side of the Himalaya that will cause the rainfall more in Arunachal Pradesh Assam Meghalaya ये पूरा region रे Manipur Nagaland and will have evergreen forest thick evergreen forest ଦେଖାଯିବ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ and the rich biodiversity already ये ଯାଉଛି ତମ rich biodiversity region ରେ ଯାଉଛି ହଁ କି ନାହିଁ so this is all about ତମେ କହିବା monsoonal rain distribution आम देखले monsoonal rain distribution this region less than के 30 centimeters of rainfall बुझे ना here would be 50 centimeter here would be let's say 60 to 70 centimeter धीरे धीरे बढ़िबो 80 centimeters 100 centimeter 120 150 and 200 बुझी परिबो ना बुझी परिबो so like this that will increase हाँ कि नहीं सेमती तमे 80 नहीं जाओ let's say 80 नहीं गेला तमे 200 then here would be 250 300 and here would be 400 ये भी बढ़िबो तुम जते ईस्ट को आसबो हिमालयन रीजन भी रेनफॉल एमती बढ़िबो वेस्टर्न घाट रेनफॉल एठी हम 300 200 और 250 अको 250 कर दिया then 200 then 100 ये भी एमती जाउछि ना बुझा पड़िबो ना ये कोस्टल रे आसबा 200 150 100 70 ये भी कोस्टल रीजन एमती रेनफॉल पैटर्न चेंज हो सो दीज आर द रेनफॉल हम कही परिबा सेंट्रल इंडिया केते 100 एंड लेस देन 100 बुझि पड़छ सो दिस इज द पूरा हमर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया देखितले विथ डिफरेंट ब्रांचेस ओके नहीं विथ डिफरेंट ब्रांचेस ना प्रोपागेशन एबे में ये सब ऑलरेडी गारो खासी जयंतिया एक कहि देछि सब डिस्कस कर देछि है ना मौसेराम रे कहीं अधिक होची बिकॉज ऑफ द क्रेस्ट ये जो क्रेस्ट टा होची आको हम कोन क्रेस्ट कहूचे ये जो लोअर पार्ट को क्रेस्ट कहूचे ना एमती अप एंड डाउन एटा क्रेस्ट पार्ट एटा होची तमर कोन ट्रो एबे देखो ये होची तमरो ब्रांचेस है ना ये गोटी ब्रांच ओके दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस here you can see the branches how this one is moving here striking एठी लिखा है ना अराकायमा माउंटेन and this one striking and moving back towards the India. Okay, नहीं तो अराकायमा माउंटेन रो जो कनकेव शेप होची that is gifted to India. है ना बुझा पड़िबो एबे this अराकायमा mountain is running chain of पूर्वांचल रो रनिंग चेन है ना ये तुमको डिफ्लेक्ट करला एंड एटीएक्स की पहुंचे की जाउची वेस्टर्न यूपी की सो उत्तराखंड इज द मीटिंग पॉइंट उत्तराखंड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू मॉनसूनल ब्रांच आंसर एठी रहबो तुमरो साउथ वेस्ट एंड हम कहबा ईस्टर्न बा बे ऑफ बंगाल ब्रांच दीटार मीटिंग पॉइंट होछु उत्तराखंड सेति में उत्तराखंड रो अधिक रेनफॉल हुए क्लाउड ब्रस्ट हुए है ना एठी तुमरा आरावली पैरेलल अछि ऑलरेडी हम देखि से पैरेलल है ना ये तुमको कहतली ये जो गैप अछि गैप रे रेनफॉल अधिक हबो कना है ना डन एबे बुझा पड़ जो समस्त को ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये तुमरा स्ट्रांग देखो 65% रेनफॉल कंट्रीब्यूट करूची 35% ताले ये स्ट्रांग ब्रांच हे गेला दिस वन इज द स्ट्रांग दिस वन वुड बी वीक ब्रांच ये वीक ब्रांच तो ऑलरेडी कहि छै ना स्टार्टिंग रो हां आपको
This one A, B and C, that is the what Konkan coast, Malabar coast and Gujarat coast आपको डिवाइड करथिले एबे आराम से फिगर देखिए वो समस्त देखि परिबो है ना. As the western ghat is in this season, so this would be the leeward effect. आपको एठी हमर कोन देबो leeward effect देखा जिवो. And this region will have 80 ଅଛି ତମର ବିଦର୍ଭ ଲାଥୁର ସେଥିପାଇଁ ଏ region rainfall କମ. Here would be less rain. Why? Because of two causes हम कहଥିଲେ एक तो leeward दुई रे parallel. हाँ कि नहीं खत्म पूरा हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देले. ओके राजस्थान डेजर्ट रिसीव लेस रेनफॉल. सो ऑलरेडी कह दीजिए एठी लिखा है ना पैरेलल टू अरावली जहाँ डिस्कस को सब डिस्कस कर दीजिए. बस एबे हम देखा मॉनसूनल ब्रेक को. नाउ वी विल गो थ्रू द मॉनसूनल ब्रेक. ठीक अच्छे एबे हम देखा मॉनसूनल ब्रेक. ना मॉनसूनल ब्रेक कहले कौन. मॉनसूनल ब्रेक हैला जदि 7 दिन रु 10 दिन वर्षा न हैला मॉनसून टाइम रे ताको कहजे मॉनसूनल ब्रेक. Within गोटे week but more than 10 days if rainfall does not happens or any region does not receive the rainfall 10 to 15 days, that period would be called as the monsoonal break. ताको हमें कहबा monsoonal break है ना. ताको हमें कौन कहबा monsoonal break. जदि तमरो सेही टाइम रे वर्षा न हैला किछि दिन वर्षा न हैला ताको हमें कहबा monsoonal break हमें कहबा ना बुझा पड़िबनी. that we will call it the monsoonal break. तो रेन बियरिंग क्लाउड अच्छी दे वुड नॉट कॉज रेन ताको हम कहबा है ना बुझिपारछ नहीं. 1 or more weeks से हम कहले मोर देन 7 days बा 10 days रु अधिक जदि न हैला ताको कहजे मॉनसूनल ब्रेक. ना ताको दैट रीजन वुड बी द ड्राई स्पेल. 10-15 दिन वर्षा न हैले चाष केमती हबो चाष हेई परिबन ना. दैट इज द ड्राई. तो ये कौन पई भी डिफरेंट कॉजेस अछि ता पे है ना. तापी बहुत सारा बस तुम कह डिफरेंट कजेस तापाई से भितर केतबेले लो प्रेशर जनरेट न हो पारे मॉइस्चर कमी जाई पारे बहुत सारा फैक्टर्स को नहीं कि हमें कहबा कि मॉनसूनल ब्रेक हुए. मॉनसूनल ब्रेक नंबर ऑफ फैक्टर्स को नहीं किया से तार किसी माने एमती स्पेसिफिक कजेस नहीं कि दिस इज द मेन रीजन. ईदर लेट्स से मु कहबी कोस्टल रीजन रे आमे कहबा ईदर हमर जो अमाउंट ऑफ एयर मास आसुची सदर्न ओशन रु दैट माइट रिड्यूस हो जाय पारे बा सेठी जो हाई प्रेशर अच्छी से वीक हो जाई पारे और जो लो प्रेशर इंडिया अच्छी ये वीक हो जाई पारे प्रेशर ग्रेडियंट कमी जाई पारे किछि भी हो पारे. तो एमती अपर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर देखा जाई पारे. तो एमती आमे कहि परिबा डिफरेंट रीजन अच्छी. पोस्ट मानसून अक्टोबर नवेम्बर को आमे कोन को पोस्ट मानसून. मानसून सरी जीवो सेप्टेम्बर रे तले अक्टोबर नवेम्बर को आमे कोन को पोस्ट मानसून. तले पोस्ट मानसून रे कोन हो रेनफॉल कमी जीवो ड्राई एबे देखो पूरा ड्राई कंडीशन बुझिपारछ तो ड्राई चलती वर्षा बहुत दिन है बहुत दिन है वर्षा है तो यहाँ कौन ड्राई चलती से गच सब पत्र झड़ा देदेले. तो दिस इज द ड्राई स्पेल. बर्तमान ताले कौन चलती आमर ड्राई स्पेल इज गोइंग ऑन ओके नहीं. ताले पोस्ट मानसून हूँ ड्राई स्पेल. पोस्ट मानसून आम कहवा ड्राई स्पेल. तो ये चलो है ना अक्टोबर नवेम्बर ये पूरा तुम ड्राई स्पेल चलो ए. आमे आकु को अक्टोबर हीट ना पोस्ट मानसून रे कौन देखा जाए अक्टोबर हीट. अक्टोबर हीट कहले कौन अक्टोबर हीट रो मीनिंग हैला वाटर बॉडी इज हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट हम समझते जानिछे. सो वाटर बॉडीज इज हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट. आज वाटर बॉडीज इज हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट जेहेतु हाई स्पेसिफिक हीट अच्छी ताले जल्दी गरम हेबनी कि जल्दी ठंडा हेबनी. ताले मानसून पर मतलब हम अक्टोबर मास फिर भी खरा हुए ना खरा हुए फिर भी देखो खरा छाड़ी गले वर्षा छाड़ी गले बहुत जोर खरा हुए हाँ कि नहीं. खाली मेघ रुए बोले खरा जना पड़े जमी मेघ न देखो पूरा खरा काटो. ताले अक्टोबर मासरे कौन हम वाटर हिट छाड़ा स्टार्ट कर जो वर्ष सारा वाटर हिट को अब्जर्व कर हिट को छाड़ से धीरे धीरे कूल हम ना धीरे धीरे विंटर्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द विंटर हिट विल लिव ता द्वारा कौन हम आटमोस्फियर हिट बढ़ लैंड ठंडा हम बट आटमोस्फियर हिट बढ़ बिकज ऑफ कौन एवापोरेशन बा मॉइस्चर अच्छी से हिट को ट्राप करके रखिब बुझिपार. तेणु यही कंडीशन को कहुए अक्टोबर हिट. तो तुमको तुरंत गरम लगे वर्षा दिन गरम लगे कि
ଯେମିତି ଦେଖିବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗରମ ଲାଗିବ ତାପରେ କୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିବ। ନଭେମ୍ବରକୁ କୁଲ୍ ହୁଏ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫିର୍ ବି ଗରମ ଲାଗେ। तो एको କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବର ହିଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚର ଥାଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଆବଜର୍ବ ଦ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବଢ଼େଇବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମଏଷ୍ଟ ଥାଏ ୱାଇଂ ଟୁ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଅପ୍ରେସିଭ୍। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମକୁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖରେ ଯାଉଛ है ना, ये आम देखा अभी गणेश पूजा हो दुर्गा पूजा हो ये सब टाइम हमको गरम लगे कि नहीं, गरम लगे डाउट बुझीपार। तो गणेश पूजा तो जल्दी ही जाए, कौन दुर्गा पूजा अक्टोबर मासरे आसे फिर भी गरम लगे आमको। ताकू जो हिटा से हिटा को कहुए अक्टोबर हिट। दैट हिट इज रेडिएटेड हिट इज लिविंग बाय द आम कह वाटर बॉडी लैंड एम हिट को छाड़ू आटमोस्फियर हिट पड़ुची तेणु आपको अक्टोबर हिट कहुए है ना। अक्टोबर हिट पर पुणी मर्कुरी तुरंत फॉल करने को स्टार्ट कर मर्कुरी एवं फॉल कर बुझे टेम्परेचर कमिया स्टार्ट हे बस। ये थिला पूरा मानसून। तापर तुम रिट्रेटिंग मानसून है ना। रिट्रेटिंग मानसून तो ऑलरेडी पढ़ाई आउ दिन ताको डिस्कस करदेवी है ना। तो मानसून रो सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून तो ऑलरेडी मुझे प्रथम रो ही पढ़ाई देती सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून। तो पूरा मानसून कवर हो गला तुम है ना। ये पूरा मानसून कवर एवं मानसून उपर क्वेश्चन शायद लिखिपर तुमको जब डेजर्ट फॉर्मेशन कथा भी आसे तुम लिखिपर बुझीपार कि मानसून कहीं होनी कहीं कौटी हो। दैट मीन्स मानसून जानिले केतेटा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर देखी दियो। तो फास्ट है तुम नेचुरल वेजिटेशन को कहीपर ये कहीं सेटा कहीं। सो फास्ट पॉइंट हूँ ना इफ यू आर अवेयर ऑफ मानसून देन यू कैन फाइंड आउट द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कहीपर सॉइल रो प्रॉपर्टीज को आम कहीपर। तो सॉइल प्रॉपर्टीज ना कहीपर सॉइल टाइप्स आम कहीपर मानसून जाने ना कहीपर। क्रॉपिंग पैटर्न आम कहीपर क्रॉपिंग पैटर्न आम कहीपर कहीं रेनफॉल अनुसार तो क्रॉप हम ना। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर आउ कौन राइस हम कि हम ही नहीं ऑयल सीड हम बुझीपार बुझीपार। दैट मीन्स जब आम रेनफॉल जाने क्रॉपिंग पैटर्न कहीपर सॉइल टाइप करवा तार मिनरल्स कहीपर वेजिटेशन रो टाइप्स कहीपर डेजर्ट कहीं होती आम कहीपर एरिड रीजन ऑफ इंडिया कहीं कहीपर डिफरेंट कहीं बुझीपार। ऑल दिस थिंग्स कैन बी सॉल्व ओनली थ्रू द मानसून से मानसून पढ़ा जाए कहीं उत्तराखंड अधिक फ्लड हो केरला कहीं हो बुझीपार लैंडस्लाइड ये कहीं होटी कहीं हो सब लिंक कर आराम से। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन गोटे टॉपिक पढ़े सॉल्व हो लैंडस्लाइड सॉल्व हम फ्लड हम फॉरेस्ट डेजर्ट एरिड कहीं कौटी ह्यूमिडिटी कहीं अधिक कि से मेघालय कहीं अधिक रेनफॉल हो कहीं टी रवि कॉफी एंड ऑल दिस थिंग्स वाई कल्टिवेटेड इन सर्टन एरियाज आपको भी हमें सॉल्व कर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस डेटा एंड फैक्ट्स कॉन्सेप्ट बुझीपार नहीं। आपको नहीं आम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेट से तुमको कह बेंगल कहीं अधिक वाई बेंगल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। रेनफॉल अच्छी रिवर अच्छी रिवर भी अच्छी और रिवर पेरेनियल रिवर अच्छी एठी ना प्रथम कथा ना एठी तुमको पेरेनियल रिवर अच्छी दुई रे रेनफॉल 100-200 सेंटीमीटर्स फर्टाइल सॉइल अच्छी प्लेन एरिया गांगेटिक प्लेन तो हम ना बुझीपार। दैट इज वाई प्रत्येक वर्ष पटुमाटी जमा हो। तो दीज आर द रीजन आम सब सॉल्व कर जदि तुम मानसून पढ़ी देच बुझी जाइए इजिली यू कैन सॉल्व दिस थिंग्स बुझीपार। बास टिके करंट अफेयर पढ़ीदेव डेटा फैक्ट्स आने खत्म। नंबर ऑफ क्वेश्चन आम ये सॉल्व कले ना बुझा पड़ोनी गोटे टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना। लेट से तुमको कह वाई अरावली राजस्थान एमपी वाई दे आर कल्टिवेटिंग मोर ऑयल सीड एमाने ऑयल सीड अधिक चाष करती हाँ कि नहीं आउ कौन मिलेट्स अधिक चाष करती एठी कौन देखा मिलेट्स वाई बिकॉज ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ एरिड कंडीशन बिकॉज ऑफ डेजर्ट ये वाई कर्नाटका प्रोड्यूसेस मिलेट बिकॉज ऑफ लीवार्ड इफेक्ट कर्नाटक सीना वेस्टर्न साइड रेनफॉल हम बाकी पार्ट रे लीवार्ड इफेक्ट देखा तो मिलेट ये भी तो हम रागी रागी गोटे भी तो मिलेट ना कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। सुगर कैन कहीं आम कह बेंगल ए रीजन रोचे रेनफॉल बुझीपार। केरला सुगर कैन रेनफॉल महाराष्ट्र
जोठी जोठी रेनफॉल हम से ओडिशा रे भी सुगर केन होची राइस होची बिकॉज ऑफ रेनफॉल। तो ये सब रीजन को हमें इजिली हमें ताको कनेक्ट करि परिबा विथ डिफरेंट एंगल्स रो। ताले आपको डिफरेंट एंगल्स रो पढ़िबो, खाली मॉनसून हिसाब रे पढ़िबोनी। मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसून सॉइल ताको लिंक करके लिखिबो। मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसून सॉइल, मॉनसून एग्रीकल्चर, मॉनसून डेवलपमेंट, मॉनसून अमक बुझि पाछो नै। तो डिफरेंट एंगल रो ताको पढ़िया पड़े। ନାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଖାଲି ମନସୁନ୍ ପଢ଼ି ଦେଇଛ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ଲାଭ ଦେବନି। କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯିବ କାହିଁକି କେରଲାରେ ମନସୁନ୍ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ୱାଇ କେରଲା ମୋର୍, ତାର ରିଜନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ୱାଇ କେରଲାରେ ଟି କଫି ରବର ହେଉଛି, ତାର ରିଜନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ କି ହାଉ ମଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲିଙ୍କିଂ ଦ ଟପିକ୍। ଯେ ଲିଙ୍କ୍ ନ କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବନି, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲିଙ୍କିଂ କରି ऑलरेडी ମୁଁ ତମକୁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଲରେडी ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ଆଫର ରିଜନ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ମନସୁନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ, ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ है ना। मॉनसून खत्म हो गया एंड ये सब जहाँ थे तमर नेक्स्ट ରହିବ ट्रपिकल साइक्लोन। बुझा पड़ो समस्त को, प्राची, सुभद्रा, अनीता। ଆଜ୍ଞା।